So yesterday we learned about what are two-dimensional and three-dimensional space, simply stating if any shape is flat without any thickness, or the thickness is so less that it can be ignored, right? For example, a page, the page of your notebook, the thickness is so less that we can just ignore it. It's also called negligible thickness, जो हम neglect कर सकते हैं, ना के बराबर. तो उन shapes को हम बोलते हैं two dimensional. And if there is any thickness which we feel can be measured, then it will be called a three dimensional space. So let's watch these videos further to understand how the 2D shapes and 3D shapes are related to each other. Cross sections. A cross section is a two-dimensional shape that is formed when you cut a three-dimensional figure. Cross sections are not only important in the mathematical world, but also in real-life applications. Cross sections are used in geography to analyze Earth and its core. Cross sections are also used to evaluate the age of trees and how the environment affected the tree's growth over a certain period of time. Chefs also use cross sections to present their food in an appetizing manner. As you can see, cross sections are used throughout the world around you. Before you can understand cross sections, you must be able to decipher between two-dimensional shapes and three-dimensional figures. Two-dimensional shapes, also referred to as 2D, are flat figures. They have only two dimensions as seen in the shapes pictured. These shapes have only two dimensions. Three-dimensional figures, or 3D figures, are figures that have three dimensions. 3D figures have height, width, and depth, as seen in the shapes pictured. These shapes have three dimensions. Some common three-dimensional figures are pyramids, prisms, cylinders, cones, and spheres. There are a number of relationships between two-dimensional shapes and three-dimensional figures. One relationship is the rotation of a 2D shape. Rotating a two-dimensional shape around an axis will create a three-dimensional figure. For instance, if you are given a square and you rotate the square about the y-axis or vertical axis, you will create a cylinder. Another relationship between two-dimensional shapes and three-dimensional figures is cross sections. As stated before, a cut made to a three-dimensional object will produce a two-dimensional figure known as a cross section. With each different three-dimensional figure, a different cross-section will be formed, depending on the cut. When identifying cross-sections of three-dimensional figures, it is important to understand the cut of the figure and envision the two-dimensional figures that would be formed. Now look at a few examples of determining cross-sections of three-dimensional figures. If you are given a can of soda, which is a cylinder, and you were to cut this can parallel to the base, what two-dimensional shape would you form? The cross-section would form a circle. What if you took the same can of soda and cut it vertically? What two-dimensional shape would you form? With a vertical cut, a rectangle would be formed. As stated before, different cuts on a three-dimensional figure will form different two-dimensional shapes. Look at another example of cross-sections. You are given the three-dimensional figure of a tent. What two-dimensional shape would form if the tent was cut vertically? With a vertical cut, the cross-section would be a triangle. What two-dimensional shape would be formed if you cut the tent horizontally or parallel to the base? With a horizontal cut, a rectangle would be formed. Again, with the different cuts of the three-dimensional figure, you will form different two-dimensional shapes. Cross-sections are used extensively in real-life applications, from geographical studies to MRIs. This geometry concept is seen throughout the world around you. Look around and see where you can see cross-sections in your daily life. Let's watch one more video which just simplifies the concept of cross sections, and then we can proceed.
Sorry, Anand, I'm not sure what you were asking. Ananda, what are you asking? I'm not sure what you are referring to there. Okay, no, there's this one. There's this one. I would just like to play this. This is another simple video which can help you understand how cross sections are obtained. That is the very first exercise. So if I had to put it in simple words, understanding cross sections means you want to slice the 3D object. आपके पास जो भी 3D figure है, cone, cylinder, sphere, cube, any kind of solid shape, उसको अगर आप slice करते हो, I want you to take the example of, let us take the example of an orange. Orange की example लेते हैं. अगर आप orange के slices करते हो, thin slices, very thin slices, what is the shape of those slices? Yes, the slices will be circular, right? Those circles, the shape that you see are called cross sections, right? What about a brick of ice cream or a brick of butter? Rectangles. It will be rectangle. That's correct. That's correct. Let's just quickly watch this and then we can write down the answer. So you can see here we have a cuboid. Cuboid को अगर हम स्लाइस करते हैं, वर्टिकली स्लाइस करें या फिर हॉरिजॉन्टली स्लाइस करें, तो वो जो सरफेस आपको नजर आ रही है, what shape do you see? In both cases we are seeing a rectangle, right? So this yellow shaded side, it appears from the side, so आपको ये slanting लग रहा है, but अगर इसको सीधा करके हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? Rectangle मिलेगा. Yes, it will become a rectangle. The shape will not be a rectangle. The surface will be a rectangle. You have to look at the surface. Cuboid के केस में जो dimensions होती हैं वो unequal होती हैं. Length, breadth, height अलग अलग होती हैं. इसलिए जो shape बनेगी वो rectangle बनेगी. अगर cube होता, अगर cube हो जिसमें सारी sides equal होती हैं, उस केस में क्या बनेगा? If you have a cube in which all sides are equal, इसको अगर हम, yes, in that case it will be a square. रेक्टेंगल की साइज बराबर हो जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा. Now here in this figure उन्होंने oblique cut दिया है. This is not in your syllabus. हमारे पास जो exercise में questions हैं उनमें सिर्फ horizontal और vertical cuts हैं. Horizontal means like flat, इस तरह से अगर हम cut करें, ठीक है, और vertical means like this. You should know the meaning of the two words, vertical and horizontal. Accordingly, you have to answer. No, it will not be a triangle. It will not be a triangle. You're looking at the blue part. Look at the yellow part. No, we are not doing the slanting cut. Oblique wala cut nahi kar rahe hum. Vertical, standing, horizontal, sleeping.
सो दिस इज अ क्यूब. इसको अगर हमने कट किया, एक बार वर्टिकली काटा ऊपर से नीचे की तरफ, एक बार हॉरिजॉन्टली ऐसे काट दिया, तो दोनों केसेस में आपको क्या मिल रहा है? यस बेटा, वी आर लुकिंग एट दैट सरफेस, वो जो शेड करके आपको दिखा रहे हैं. अर्षद, आपने आई थिंक मिस कर दिया. व्हेन द क्यूबॉइड वाज बीइंग स्लाइस्ड, तो जो सरफेस मिल रही थी उसको येलो से शो किया था. यू शुड वॉच द वीडियो अगेन. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट अ सिलेंडर? हॉरिजॉन्टली काटा जब उसको, सर्कल मिला. हॉरिजॉन्टली फर्स्ट केस में हॉरिजॉन्टली जब कट किया तो हमें सर्कल मिला है, और जब वर्टिकली स्लाइस किया सिलेंडर को तो क्या मिला हमें? रेक्टेंगल मिला है. So this is a horizontal cut. This is a horizontal cut. On the left side, what do you see? A circle. A circle. Let's cut it vertically now. अब ऐसे सीधा काटते हैं. What do you see now? It's a triangle. थोड़ा सा साइड की तरफ है तो हमें ऐसे नजर नहीं आ रहा. इसको टर्न करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ट्राइंगल मिलेगा. So this is a sphere. Example, apple, orange, a lemon, maybe. So इसको अगर हम horizontally काटेंगे तो आपको surface जो नजर आ रही है वो कौन सी है? Circle है. और अगर इसको हम vertically काटें, what do you get? All right. So that will be all with the video part. I'm just going to turn the sharing of the sound off. Okay. I hope everyone is clear about this. I'm going to take up the doubts of the students. Anat, can you unmute? Okay. Anat, you had raised your hand. Beta, you've put your hand down. Unmute, please. मैम मैम इस वीडियो में कुछ था तो है नहीं, तो मेरी मैम वॉल्यूम थोड़ा स्लो कर देते हैं मैम. वॉल्यूम ही मैम. There are actually some students who were saying that they couldn't hear. That's why I had to turn the voice on. That's why I had to turn the volume on. बहुत ज़्यादा मुझसे शोर था. तो मैम बीच में हुआ था उन्होंने. Harban, unmute please. एक मैम कॉल आउट है, उसके बाद 4 चैप्टर करना है ना, हम उसके बाद 5th, हम उसके बाद 9th और 11th के बाद. Ma'am, your video, ma'am, when you are playing the video, ma'am, then your voice was cutting. Okay, it's probably better due to network problem. I am facing problem today with the internet. Maybe that's why I got disconnected even once in a meeting of 8th standard. So maybe due to that. Tell me if the screen is visible. I'm not sure if the screen is visible. It is visible. Okay. I want you to write this down in your notebooks. The ways to view a solid. किसी भी सॉलिड शेप को अगर आप व्यू करते हो, नजर उसको देखते हो, तो क्या क्या डिफरेंट वेज हैं. सॉलिड एक्चुअली रेफर्स टू अ 3 डायमेंशनल फिगर. कोई भी आपके पास अगर 3 डायमेंशनल फिगर है और उसको आप देखते हो तो वो आप 3 कैटेगरीज में उसको क्लासिफाई कर सकते हो. फर्स्ट वन इज क्रॉस सेक्शंस, जो अभी हमने स्टडी किया. यस अनहद, सॉरी. क्रॉस सेक्शन, शैडो एंड व्यूज. मैम आपकी स्क्रीन में विजिबल नहीं है.
Now it should be visible now. Yes, ma'am, now. Yes, ma'am, now it is visible. मैम पहले मैम visible नहीं थी. मैंने मैम लिखी हुई थी पहले ways. मैं अपने शो नहीं किए थे. Yes, Arman? Ma'am, we will write this. Yes, beta, you have to write this. Write down Now the start heading. with Kindly write down the heading, ways to view a solid or a 3D figure. The first one is cross sections. Cross sections are obtained when we slice the 3D objects or the 3D figures either vertically or horizontally. We only have the vertical cut and horizontal cut in our syllabus. Oblique cut nahi hai hamare paas syllabus mein. Samara, this is 15th chapter, visualizing solid shapes. Name of the chapter is Visualizing Solid Shapes. मैम कलर में मैम ये शो हो रहे हैं मैम ये वाला कलर मैम अच्छा है मैम ये वाला कलर अच्छा है मैम ये कौन सा है मिक्स Yes, mixed color. Okay, the second way is we can look at the shadows the 3D figures form. आपके पास जितनी भी 3D shapes हैं, अगर हम उनकी shadow देखें, shadow किस तरह की बनती है? Shadow will also be a two-dimensional figure. Shadow क्योंकि flat होती है, तो वो भी एक 2D shape होगी. And then the third one is by looking at the solid from different sides. Means, for example, if you have your house को अगर आप सामने खड़े होके देखो तो आपको कौन सी शेप नजर आ रही है. अपने हाउस को अगर आप साइड पे जाके देखो, you go towards the side and then you look at the shape formed. And if you look at it from the top, which is not possible for you, obviously, if you're standing at a height and you look at some other building, तो ऊपर से आपको जो उसकी roof है, वो किस तरह से नजर आ रही है. That's what we will be doing in this chapter. Tell me if you have written this and then we can continue. रिटर्न Yes, the shadows, cross sections are two-dimensional, shadows are two-dimensional. The third part here, the views from different sides, it's all two-dimensional. ये तीनों के answers two-dimensional आएंगे. Yes, Rishit? मैम कैन वी स्टार्ट द एक्सरसाइज नाउ Yes, of course, of course. Rishit, unmute, please. Okay, okay. The students are writing down. Let's wait for them. Yeah, unmute, please. मैम कैन यू टेक लास्ट मैम इन क्रॉस सेक्शन मैम क्रॉस सेक्शन सिर्फ 3D पिक्चर्स में ही होती है. हाँ जी, क्रॉस सेक्शंस मोस्टली आपके पास 3D फिगर्स में ही होंगे. सारी की सारी जो 3D मैम उनके लिए कुछ सम्स भी यूज होते हैं. No. There is no calculation work, no sum to be done. Drawing और one word answer type questions हैं आपके यहाँ पे. True false होंगे बस. समझ आया. क्रॉस सेक्शन बेटा तब बनते हैं अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइस करते हो. आपने कभी मम्मा को देखा है सैलेड के लिए क्यूकम्बर को स्लाइस करते हुए, अनियन को स्लाइस करते हुए? यस. तो जब अनियन को काटते हैं, अनियन के स्लाइसेस करते हैं, तो अनियन के स्लाइसेस जो सैलेड में होते हैं ऐसे होते हैं, वो जो रिंग्स बनती हैं, सर्कल बनते हैं. अगर वो स्लाइसेस बहुत थिन हो, मींस बिल्कुल थिकनेस ना हो उनकी, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन. अगर मम्मा खीरा काटती हैं तो उसके स्लाइसेस कैसे होते हैं? हम उसके कभी सर्कल होते हैं, कभी जैसे लंबे लंबे होते हैं. वो रेक्टेंगल्स होती हैं, उनकी सर्कल सरफेस में होते नहीं मैम अनहद वो होते होते हैं मैम सर्कल होते हैं वो Anad, wait. Rishit, we are looking at only the surface, not the complete size. It will depend कि उस cucumber को कैसे slice किया गया है. अगर तो उसको horizontally slice किया गया है, तो वो circles की shape आएगी आपके पास. और अगर उसको vertically cut करेंगे तो rectangles बनते हैं. ठीक है? If you have modeling clay, अनहद बेटा आराम से. If you have modeling clay, हो सकता है घर के पास आपके पास modeling clay हो, तो उससे आप shapes बना के कटिंग करके देख सकते हो, आपको उससे और क्लियर हो जाएगा. एक्सक्यूज मी मैम व्यू फ्रॉम डिफरेंट साइड्स. मैम ये किसी और शेप का बताना. बेटा ये जब आएगा ना आपके पास टॉपिक हम तब करेंगे.
I'll discuss it. मैं स्क्रीन पे ड्रॉ करके थोड़ा सा समझा सकते ताकि चैप्टर आ जाए समझ। वो तो मॉडलिंग के लिए। I will try to explain, but see, two-dimensional figures are a little difficult to show. Yeah. Okay. Okay, This is exercise 15.3. Kindly note 15.1 and 15.2 are not in syllabus. 1 minute. Exercise. मैम पता है मैम ये तो हमें कुछ ही नहीं है सिलेबस में। The next one, we have the solids given to us. You can note down the page on which And this is 15.3. This is 15.3. Page number is 288. मैम कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं इसमें? Only one अच्छा। There is one question only. There is only one question. They are saying what cross sections do you get? आपको बताना है कि कौन सा क्रॉस सेक्शन मिलेगा अगर हम इन ऑब्जेक्ट्स को कट करते हैं। एक बार बताना है कि वर्टिकली कट से क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टली कट करने से क्या मिलेगा। We will be making a table for this so that it's easier to answer. In the very first column मैंने बता दिया कौन कौन सी solids मुझे दी हुई हैं। ब्रिक दी है, एप्पल दिया है, डाई दी है। डाई वो जो लूडो की डाई होती है जिसे हम खेलते हैं। सर्कुलर पाइप है, डाइस इज प्लूरल, सिंगुलर इज डाई, देन एन आइसक्रीम कोन। ठीक है। वर्टिकल क्रॉस सेक्शन मींस अगर उसको आप वर्टिकली काटते हो और हॉरिजॉन्टली like sleeping line. Yes. ब्रिक में कटेगी नहीं, पत्थर होते हैं। So this is the shape of a brick. It's a cuboid. And we have to draw. Yes. कटेगा नहीं मैं पर फिर भी। A brick is a cuboid. If you cut it vertically, you will get a rectangle. दोनों में रेक्टेंगल मिलेगा। And if we cut it horizontally, even then we will get a rectangle. And 1 minute I am drawing a Excuse me, brick. ma'am. Yes, Chirag? Can you move to the page where ways to view a solid was written? Only for a minute. Okay, this one. Ma'am, we will get rectangle. Yes, you will get rectangles. I'm done. Okay. You don't have to be precise with the drawing. It's only a reference. तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है जिसमें आपको किसी भी क्यूबॉइड के लिए क्रॉस सेक्शन पूछा है, कोई भी क्यूबॉइड वाली शेप हो उसका क्रॉस सेक्शन पूछा हो, तो आपका आंसर क्या होगा? वर्टिकल के लिए भी रेक्टेंगल होगा, हॉरिजॉन्टल के लिए भी रेक्टेंगल होगा। मैम जो मैम क्यूब से मैम दोनों में वो आएगा A round apple. Apple is a sphere. मैम Ma'am, yes. Apple is a sphere. in this question we need to draw. No. It will be just for your reference that if you are asked any kind of shape, उन्होंने brick We have to बोला है. write this. Yes, it will be better if you write down. In copy or in book? In the notebook. In the notebook, you can make this table and write down the answers. Yes, Yuvraj? And we have to do exercise 1.15.1. 15.1 and 2 are deleted. A die has the shape of a cube. क्यूब को कट करेंगे तो कौन सी सरफेस मिलेगी आपको? Ma'am, we square. Square. You can draw either with pen or with pencil. Anything. मैम हमने जब इनको कट करना है फिर जो इनके टॉप पे जो शेप आएगी हमने वो लिखनी है। Yes. जो 2 डायमेंशनल शेप्स आएंगे। Yes. ओके मैम। मैम अब आगे समझ, अब क्ले की जरूरत नहीं है। Okay. मैम which shape is a circular pipe? Circular pipe is cylindrical, like a water bottle.
मैं से डायग्राम निकाल तरह आइसक्रीम कोड तो मैम वर्टिकली करेंगे तो मैम रेक्टेंगल आएगा क्या? कौन Which one? आइसक्रीम कौन मैंने आइसक्रीम कोड A triangle. Vertically, you will get a triangle. मैम हाँ ट्रायंगल An ice cream cone, as the name says, ये cone बनेगा आपके पास. You can draw inverted cone or a simple regular cone. If we cut it vertically, you will get a triangle. मैम And if we, इन्वर्टेड कौन कैसा होता है मैम इस by definition, cone जब हम draw करते हैं, जब हम sums करते हैं, जो circular होता है base, वो हम नीचे show करते हैं. जो आप आइसक्रीम वाला कोन लेते हो ना, वो इन्वर्टेड होता है, मींस उल्टा होता है. मैम यस उसको इन्वर्टेड कोन बोलते हैं. मैम दोनों को लेके आंसर सेम आएगा आंसर सेम आएगा. ओके मैम Samara beta, I am going to unmute and just ask me what you want to. Now I understood with the example of a circular pipe. Okay. Ma'am, can you take an extra class tomorrow? For Ma'am, for completion of this chapter. मंडे को क्या करना तुमने we can have this class. इसको 5 मिनट. You have doubts from which chapter, Anand? मैम ये बोल रहे एक्स्ट्रा क्लास ले लेना ये चैप्टर कंप्लीट कर देना कल अच्छा. Don't worry, beta. It will just take one more period. We will be able to complete it. It's okay. For one chapter, if we are taking 2 or 3 classes, that's completely fine. हम संडे ठीक हो सकते हैं. Don't worry. I will take your class next Saturday. Then we need to do exercise 15.4 on book or notebook. Yes, exercise 15.4 is to be done in the book itself. Tell me if everyone has completed this. This completes your exercise 15.3. मैम 15.1 in book 15.12 are deleted. 3 is done. This is exercise 15.3. Please note this is exercise 15.3. Page Okay, number ma'am. Ma'am, now 288. which exercise we have to do Next. Can we do one question of 15.4? सीधा तो बहुत देख लग रही वैसे मैं कह रही हूँ Exercise 15.4. This has 3 questions and we will be doing all 3 in the book. Please write down exercise 15.3. All questions are in book. मैं 15.4 के Yes, 15.4 के सारे questions आपके जो हैं वो बुक में हैं. पेज है 289 290. Okay, Turn ma'am. to page. Yes, turn to page number 289. Ma'am, 1 minute. This is the question. Ma'am, 1 minute, wait. Okay, I think the students were completing that answer. Wait. Yeah. Yes, Jivitesh. Ma'am, page number. Ma'am, I don't have my book right now. So can you send it in the group? Okay. Ma'am, what is the page number? 289. मैं अपनी तो बुक ही खत्म कर देती हूँ. बुक ही खत्म हो जाएगी. मैम इतने पेजेस हम बनाए किसने? मैम बुक ये बनाई नहीं है, प्रिंट होती है, पेजेस होते हैं प्रिंट. बनाई मैं किसी ने लिखी होगी ऐसे थोड़ा अपने आप की. Okay. Exercise 15.4. First question.
A bulb is kept burning just right above the following solids. ये जो कुछ solid shapes दिए हैं, ball है, first part में एक ball है, second part में एक pipe है, third part में एक book है. इनके ऊपर एक bulb place किया गया है और bulb जो है वो जग रहा है. ठीक है? The bulb is lighted. Now they are saying कि जो इनकी shadow बनेगी, आपको बताना है वो shadow कौन सी shape की होगी. And you could also attempt to give a rough sketch of the shadow. आप यहाँ पे shadow draw करके भी दिखा सकते हो, if you want. So what do you think in case of a ball? Shadow कैसी होगी? Circle. Circle. Right? And in case of a pipe, you can just draw it on the base. Yes, you can just show it. इसकी जो shadow बनेगी वो rectangular होगी. What about book? Rectangle. Yes. book की shadow भी जो होगी वो rectangular होगी. अब इस केस में तो उन्होंने कहा था कि जो लाइट सोर्स है, जो बल्ब है, वो बिल्कुल ऊपर था. नाउ यू कुड थिंक ऑफ द सन चेंजिंग इट्स पोजीशन. जैसे सन की पोजीशन चेंज होती है थ्रू आउट द डे, आपकी शैडो की शेप भी चेंज होती है. तो अगर आपका शैडो हो नून टाइम पे, व्हेन द सन इज ओवरहेड, तो आपकी शैडो भी ऑलमोस्ट सर्कुलर होती है, राइट? व्हाट इफ द सन इज इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग? आपकी साइड पे होगा, ऑन आइदर साइड, तब आपकी शैडो कैसी होती है? आपकी शैडो लॉन्ग हो जाएगी, राइट? नाउ थिंक ऑफ द सेम थिंग हैपनिंग टू दीज शेप्स. अगर बॉल के ऊपर बल्ब था तो जो शैडो बनी थी वो सर्कल थी. अगर ये बल्ब साइड पे होता तो ये जो सर्कल है इसमें कन्वर्ट हो जाना था, ओवल बन जाना था. वेरी गुड तन्वी, वेरी गुड. तो जो सर्कल है वो इलोंगेट हो जाना था और वो ओवल बन जाना था. अगर किसी ऑब्जेक्ट की शैडो स्क्वायर हो, normally if the light source is on the top and shadow is square, what happens if the light source is on the side से अगर लाइट पड़ेगी तो शैडो लंबी होके क्या बन जाएगी? रेक्टेंगुलर बन जाएगी. सो डू रीड द क्वेश्चन के लाइट सोर्स कहाँ पे है, ऊपर है या साइड पे है. Accordingly you have to answer. So that will be all for today. We will be continuing question 2 on Monday and hopefully we can finish this chapter. Yes, Rishit? Sorry, I think I unmuted Tarandeep. Rishit, unmute beta. Ma'am, how do we come to know that the shadow of the subject will be this? Looking at this shape, you have to, put your imagination to play. We could also experiment, but not at that time. You could use the flashlight of your phone and use a ball or a pipe kind of object and experiment this. Ma'am, if the question will come that what is the shape of a shadow of a human being when the sun is at the evening They time? will not give you the shape, actually such kind of object, because human को आप classify नहीं कर सकते ना. Human being की shape किसी भी इस category में fall नहीं करेगी. Cube, cuboid, sphere, cylinder, cone, इस तरह की shapes आएंगी आपको. Okay, ma'am. ठीक है. सर्कल कैसा है आपका? स्फीयर है, सॉरी, बॉल आपकी स्फेरिकल है. Excuse me, ma'am. यस तरनदीप. Excuse me, ma'am. Ma'am, the one, please, ma'am, Latin. Beta, they are joining at the end of the meeting. How could I let them in? The class is almost up. I'm just taking up doubts now. Okay? Yeah. Okay, ma'am. अगर स्फेरिकल शेप है, बॉल है, Madam, टमाटो है, एप्पल है,
तो उस केस में शैडो सर्कुलर बनेगी. आई वांट यू टू ट्राई दिस. अपने फोन की फ्लैश लाइट यूज करना, नीचे टमाटो प्लेस करके शैडो देखना कैसी है. पाइप की जगह पे आप वाटर बॉटल प्लेस कर सकते हो. बुक्स तो आप सभी के पास हैं. एंड देन यू कैन सी व्हाट काइंड ऑफ शैडो इज फॉर्म. Keep the torch on the top and then look at the shadow. Okay, ma'am. And ma'am, if the light source will be under the object, so no shadow will be found. शैडो ऊपर बनेगी, ऑपोजिट साइड पे बनती. किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट की शैडो जो होगी वो दूसरी तरफ बनती है. लाइट जिधर से आ रही है उसके ऑपोजिट साइड पे बनेगी. Okay, ma'am. और अगर हमें क्वेश्चन आया कि पुट अ बॉल in a Light open source. ground and put a light source under it, so ma'am, no shadow will be found because we cannot see the shadow on the sky. Yes, but they won't give you such a question. Okay. Yeah, you can think of different scenarios where they could give you this question. Samara beta, okay, you can note this down. The rest of the students can leave. I think we will continue Bye, from ma'am. second question on Monday. All right. Samara Bye, beta, you ma'am. can Bye, finish this. Okay. bye, ma'am. मीटिंग खत्म होने वाली है. Yeah, I know. Bye, everyone. Bye, ma'am. Bye. मैम आप सिलेबस भेज देना फर्स्ट टर्म का फिर से. Okay, sure. थैंक यू मैम. Yes, Damandeep. Ma'am, I was disconnected because of ma'am connection. Ma'am, my work is also left.